Hi and welcome back to this another IPO review video. I'm Kinjal Parekh और आज हम इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के IPO के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी का IPO 13 दिसंबर को ओपन होगा फॉर सब्सक्रिप्शन और 15 दिसंबर को क्लोज होगा। IPO इशू साइज ₹1,200 करोड़ है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 800 करोड़ विल बी अ फ्रेश इशू एंड द रेस्ट विल बी एन ऑफर फॉर सेल। IPO प्राइस बैंड ₹469 to 493 पर इक्विटी शेयर है विद 30 शेयर्स पर लॉट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ्स, स्ट्रैटेजीज, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिटेल्स को भी देखेंगे और समझेंगे। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। द कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस एंड इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया। कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है फॉर हाउस कंस्ट्रक्शंस, एक्सटेंशंस, रिनोवेशंस एंड परचेज ऑफ न्यू होम्स और प्लॉट्स। They also offer loans against property. The loan amount is generally between say 5 lakhs to 50 lakhs for a tenure of up to 20 years. As of 30th November 2023, India Shelter has disbursed over 5,500 crore in loans. Moving on, कंपनी के रीच और प्रेजेंस को समझते हैं। The company's distribution network is both physical and digital and is spread across various cities, including in Tier 2 and Tier 3 cities. They have a network of 183 branches spread across 15 states with a presence in Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka and Gujarat. Alongside company की एक in-house team भी है of over 300 collection officers as of 31st March 2023. To enhance customer satisfaction, कंपनी ने iServe लॉन्च करा है, जो एक डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस एप्लीकेशन है टू केटर टू क्वेरीज एंड कंसर्न्स ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑनलाइन ऑन टाइम। मूविंग ऑन, कंपनी के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिटेल्स को देखते हैं। FY21 में कंपनी का टोटल इनकम 322 करोड़ था। इन FY22 इट वाज 459 करोड़ और FY23 में 606 करोड़ का टोटल इनकम कंपनी ने रिकॉर्ड करा। नेट प्रॉफिट को देखते हैं। FY21 में 87 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड करा। इन FY22 इट वेंट अप टू 128 करोड़ और FY23 में 155 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिकॉर्ड करा। कंपनी के कुछ फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज को देखिए जो कंपनी आने वाले दिनों में फोकस करेगी। तो इट इंक्लूड्स टू फर्दर ग्रो एंड डाइवर्सिफाई इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू अचीव डीपर पेनिट्रेशन इन की स्टेट्स एंड ड्राइव सस्टेनेबल ग्रोथ, टू leverage technology stack to achieve scalability, improve efficiency and productivity of its existing branches, to diversify borrowing profile and optimize borrowing cost, and also to enhance brand equity and foster sustainability. इस IPO के थ्रू कंपनी जो प्रोसीड्स रेज करेगी, द कंपनी इंटेंड्स टू यूज देम टुवर्ड्स टू मीट फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स टुवर्ड्स ऑनवर्ड लेंडिंग एंड ऑल्सो फॉर अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स अबाउट इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी का IPO 13 से लेके 15 दिसंबर तक ओपन होगा फॉर सब्सक्रिप्शन। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस IPO, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी तरह IPO से रिलेटेड सारे अपडेट्स के लिए मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू नेवर मिस आउट ऑन एनी ऑफ आवर फ्यूचर वीडियोज। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज देन प्लीज लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी विल गेट बैक टू यू। Thank you and stay tuned. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.